हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 8th एसएस का वर्कबुक चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एज पर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेप्स वेर टेकन बाय सर सैयद जी राव गायकवाड़ी एंड हिज वाइफ चिमनाबाई गायकवाड़ी टू स्प्रेड एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर है महाराज सैयद जी राव गायकवाड़ी ऑफ वडोदरा प्रोवाइडेड फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन in his state in 1901 AD. He also started scholarship for two Dalit students to study in foreign universities, and his wife Chimnabai Gaikwadi passed a law granting scholarship for two Dalit students to study in foreign universities. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ सेकंड नंबर का क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज लिटरेसी। According to him, there is no beginning or end of literacy. Rather, it is just a tool with the help of which a man and woman can be educated. Literacy is not a self-learning. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है, विच efforts were made by various reformers in महाराष्ट्र फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको डाल के लिखना है, महादेव गोविंद रांडे एंड हिज वाइफ रमाबाई रांडे इस्टाब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स एंड विडो। सेकंड पॉइंट डाल के लिखना है, ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फूले इस्टाब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स एंड विडोज। और थर्ड पॉइंट डाल के लिखना है, महर्षि कर्वे इस्टाब्लिश अ सैनिटरी यूनिवर्सिटीज फॉर वुमेन इन 1916 AD. And today this university is known as working as SNDT. SNDT का फुल फॉर्म होता है श्रीमती नाथीबाई दामोदास ठाकरसे यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी बिजनेस कैम इन टू एक्सिस्टेंस इन दी 20th सेंचुरी इन इंडिया। तो आंसर है आप लोग का, लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कैम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 20th सेंचुरी. These included the Indian Institute of Science in Bangalore, the Bose Research Center in Kolkata, the Research Center affiliated with the Forest Department in Dehradun, the Center for Agriculture in Delhi, the Center for Engineering in Roorkee, and the Bandarkar Institution in Pune. Question number 5, which social malpractices or evil were prevalent in India during the 19th century. तो आंसर है, ड्यूरिंग द 19th century, social evils like child marriage, untouchability, female infanticide, slavery, sati pratha, caste discrimination, prohibition of widow remarriage, literacy and superstition were the prevalent of India. Now question number 7, give historical reason for the following statements. Question number 7 का क्वेश्चन नंबर 1, the 19th century इज ऑल्सो नॉन एज द सेंचुरी ऑफ रेनाइसेंस इन इंडिया। तो इसका आपको रीजन देना है। तो आंसर है, ड्यूरिंग द 19th century सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरेज, लिटरेसी, सुपरस्टिशन were prevalent in India. Of the 19th century is also known as the India of socio-religious movement campaigns because of the greatest reformers campaign against these social evils in India, both individually and through, is also known as the century of socio-religious also renaissance in India. सेकेंड नंबर, राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। तो आंसर है, वन दी ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड कैंपस अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक द सती सिस्टम इन इंडिया बोथ इंडिविजुअली एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन. राजा राम मोहन रॉय established the आत्मीय सभा in 1815 AD and the Brahmo Samaj to fight against social evils like the sati system, child marriage and the allowing widow to remarry. Lack of women's education. Due to this effort, William Bentinck passed a law against the sati system and prohibited it. Question number 8, answer the following question as required. First number, what was the condition of women's education in India during the British rule? तो आपका आंसर है, men and women had equal opportunity for education in ancient India. Women were stopped for being educated in the medieval era by sitting the
region of the safety and security. Women's education started in India at Srirampur near Kolkata, where a fellow merchant and his wife set up a girls' school. From 1813 AD, to 1815 AD, Christian Kalergi and some other wealthy families set up institutions to educate girls. Provinces of Bengal, Mumbai, Madras, Chennai, Rajaram Mohan Roy, and Dayanand Saraswati advocate women's education in the 19th century. Bethune and Ishwarchand Vidyasagar from Bengal was an ardent Brahmo Samaji. Ishwarchand Vidyasagar established the Hindu Balika Government School in 1849 AD. By 1873 AD, there were 1,640 girls' schools in British India. At this time, only 4.89 girls went to school. Thus, the progress of women's education in the 19th century was very low. सेकेंड नंबर, स्टेट महात्मा गांधी थॉट ऑन एजुकेशन. तो आंसर है अलॉन्ग विथ स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस गांधी जी मेड हरकुलियन इफर्ट्स टू प्रमोट एजुकेशन. ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना है. महात्मा गांधी जी स्टार्टेड ऑन एजुकेशन प्लान इन 1936 AD, which was popularly known as वर्धा शिक्षण योजना. He had formed an education committee under the leadership of Dr. Zakir Hussain. Second point, according to Gandhi ji, there is no beginning or end of literacy. In fact, it is just a tool with the help of which man and woman can be educated. Literacy is not a self-learning, nor it is known as knowing the alphabet. Third point, Gandhi ji tried to sustain the Indian education system against the Western style of education by implementing educational ideas such as Nai Talim, Bunyadi Shikshan, Vardha Shikshan Yojana, Basic Education and Skill-based vocational education. Fourth point आपको लिखना है, Gandhi ji believed that the prevailing education system had failed to shape the life of the student, provide employment to him. Question number 9. Write a short note on फर्स्ट नंबर एक्टिविटीज़ ऑफ दी ब्रह्मो समाज. तो आंसर है आप लोग का, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828 AD. राजा राम मोहन रॉय हैड एस्टैब्लिश द आत्मीय सभा इन 1815 AD टू कैंपेन अगेंस्ट सोशल इविल्स प्रिवलेंट इन इंडिया. The some institution become famous as the Brahmo Samaj in 1828 AD. The main activities of the Brahmo Samaj were as follow. First point, we started massive campaign against the Sati system in Bengal by publishing a magazine called the Savak Kaumudi in 1821 AD. Second point आता है, because of the efforts of the Brahmo Samaj, William Bentinck passed a law against the Sati system and prohibited it. Third point, in the same way, due to the efforts of the Brahmo Samaj, laws were passed against the evil practice of human sacrifice yani narbali and the practice of female infanticide yani doodh piti. Fourth point, they printed books, pamphlets in favor of widow remarriage to bring awareness among people. 5 point, Rajaram Mohan Roy requested Governor General William Bentinck to start English education in India. His effort marked the beginning of English education in India. 6 point, he made special effort and requested for educating women. 7 point, effort were made to abolish child marriage. और 8 नंबर आता है आप लोग का advocated intercaste marriage. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका शॉर्ट नोट लिखना है, जिसपे आपको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर के थॉट जो है एजुकेशन के बारे में, वो आपको इसके ऊपर लिखना है नोट्स. तो आंसर है आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर, नोन एज गुरुवर या फिर कविवर, वॉज अ ग्रेट लिटरेचर. ही वॉज एन अर्डेंट वर्शिपर ऑफ नेचर. हिज थॉट वॉज एजुकेशन आर एज फॉलो. फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ नेचर एजुकेशन एज ही फर्मली बिलीव्ड द नॉलेज कैन बी ऑब्टेन ओनली इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ नेचर. सेकेंड पॉइंट में है अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, एजुकेशन शुड बी एबल टू डेवलप द चाइल्ड क्रिएटिविटी. Third point, a child should be free from the rigorous discipline of the education. Fourth point, the education system should develop the child imagination and curiosity. 5 point, he advocated that children should be encouraged to learn different arts such as music, acting and have an amplitude from painting. 6 point, he strongly believed that children learn moral values and spirituality.
7 point, he also believed that the teacher should have the ability to develop the child physiology. क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोग का टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो आंसर है Swami Vivekananda had thought that follows. First point, he vehemently opposed the prevalent social evils and religious practices. Second point, according to him, he did not believe in any religious or god that cannot wipe a widow's tear or put a piece of bread in the mouth of a helpless child. Third point, he used to say first food then religion. Fourth point, he say God is every human being. According to him, service to man is service to God. 5 point, he urged youth अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ. तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं में. जय हिंद, जय भारत.